Amit. I'm a senior mentor at MBA Easy. We are a CAT training institute based in Patna. I have been mentoring CAT students for last 11 years or more. I also appear for CAT exam on a regular basis almost every year. I've done my BTech and MTech both from IIT Madras. Therefore, thereafter I worked for about 5-6 years in different corporates, and then I am totally into CAT mentoring, teaching students, fulfilling their aspirations. That is, that is where I have found my peace. Okay. So, those of you who are following our channel, you would know that every day we post one very good question, a good quality question which will have a lot of conceptual understanding, conceptual depth behind it. And through those questions, we also try to explain you not just the solution of the question, but also the concept behind it. Concepts which are going to be very, very helpful for you in your CAT examination, in your preparation for CAT examination. So today also we have come up with another no very good question, and through this question we'll learn a concept which has got wide application in CAT examination. So let us go through the question first, and then we'll discuss the concept and the solution part also. Through solution we'll discuss the concept. So the question is x square into y to the power 4. So x square into y to the power 4, the value is given. It is 3 power 6 into 2 to the power 4. This is the value of x square into y to the power 4. And you have to find the minimum value of 4x plus 2y. You have to find the minimum value of this number. Right? This is my question. Now, I would strongly urge you to watch the previous video, that is 21st October video. There we have explained what is AMGM inequality, and we had taken up one question based on AMGM inequality. This is the second question of the same concept, AMGM inequality. This is in fact the exact reverse of the previous question. पिछले क्वेश्चन में सम इसकी वैल्यू दे रखी थी, सम की वैल्यू दे रखी थी और प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछा था. In this question we have given you the maximum, we have given you the value of the product of variables, and you are supposed to find out the minimum of the sum of variables. So this is exact reverse. पिछले क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी थी, ये निकालना था. इस वाले क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है, प्रोडक्ट वाली वैल्यू दे रखी है, और हमें सम की मिनिमम वैल्यू निकालनी है. This is my objective. Now I know this is based on AMGM inequality, so let us first understand how to apply AMGM inequality. Now think about it. If you take quantities as x, x, y, 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 and y, you can write this as x into x into y into y into y into y. This will give you x square into y power 4. Alright, this is 3 power 6 into 2 to the power 4. This is given. But if you take quantities as x, x, y, 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 you will, when you take am of these quantities, you'll get x plus x plus y plus y plus y plus y, and because there are 6 quantities, we'll divide it by 6, so it'll become 2x plus 4y divided by 6. But you don't want 2x, you want 4x, and you don't want 4y, you want 2y. So if you take quantities like this, it will not serve your purpose. आपका जो प्रॉब्लम है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो मीट नहीं हो पाएगा, बिकॉज हमें 4x चाहिए. इस तरह से क्वांटिटीज लेने से क्या आएगा, 2x आएगा. और वाई 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 लूंगा तो मुझे 4y आ जाएगा सम में, एम में, जबकि मुझे चाहिए 2y. So I have to do some adjustment here, right? So the key to these types of question is to do the adjustment properly, and it is not very difficult. बहुत आसान है. अब ध्यान दीजिएगा. सी यहाँ पे x 2 बार है, तभी x स्क्वायर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे x 4 टाइम्स है, 4 बार ऐड करने से आएगा. So instead of taking x, you take it as 2x. You can say 2x into 2x will give you 4x square. यहाँ पे x square है, right? Now similarly 4y का मल्टीप्लीकेशन है, और 4 y's को ऐड करने से क्या आना चाहिए, 2y आना चाहिए. So what I will do, I'll take y by 2 into y by 2 into y by 2 into y by 2, right? This is what we have taken. So this becomes x square into y to the power 4 divided by 2 square. बिकॉज ऊपर से 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 स्क्वायर नीचे बचेगा. सो दिस इज माई नंबर, एंड हमें इसकी वैल्यू निकल सकती है. कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3 पावर 6 इंटू 2 टू द पावर 4. दिस वैल्यू वी नो.
this value is 3 power 6 into 2 to the power 4. So I know that this value x square into y to the power 4 की जगह हम डाल सकते हैं कितना 3 power 6 into 2 to the power 4. So this is 3 power 6 into 2 to the power 4 divided by 2 square, right? So ये आ जाएगा 3 power 6 into 2 square. So this is my number. So I hope you are getting the idea why we have done it. क्यों ऐसा किया हम लोगों ने? बिकॉज जब हम x x और y लेंगे तो am में तो आ जाए, gm में तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 4. पर जब हम लोग am लेंगे अरिथमेटिक मीन, तो उसमें x प्लस एक्स वाई ऐड करेंगे तो 2x प्लस 4y आएगा, जबकि हमें चाहिए था 4x प्लस 2y. सो दो x इस तरीके से लेना है कि उसका सम 4x हो जाए. तो क्या लेंगे 2x दोनों का सम कितना आ जाएगा 4x. और 4y इस तरह से लेंगे उसका सम 2y आ जाए. तो क्या लेंगे y/2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2y. दैट इज द ऑब्जेक्टिव. सो अब हमें पता चल गया कि अगर हम लोग क्वांटिटीज को इस तरह से लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3 पावर 6 इंटू 2 स्क्वायर. कैसे आया? एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 4 की वैल्यू दे रखी है कितना 3 पावर 6 इंटू 2 टू द पावर 4. सो यू पुट दैट 3 पावर 6 इंटू 2 टू द पावर 4 और ये डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर हो गया. 2 स्क्वायर से डिवाइड कर दिया 3 पावर 6 इंटू 2 स्क्वायर आ गया. अब हम लोग कह सकते हैं अगर हम लोग इन क्वांटिटीज का एम और जीएम लें. सो एम तो मुझे पता, एम एम क्या होगा? एम विल बी 4x plus 2y divided by 6 because there are 6 quantities 1 2 3 4 5 6. सबका सम लेंगे तो कितना आएगा 4x plus 2y और divided by number of quantities 6. So this is my aim. And gm will be product of all of this, इन सभी का product to the power 1 by 6, यानी इस नंबर का 1 by 6. So gm is 3 power 6 into 2 square whole to the power 1 by 6. So this will give you 3 into 2 to the power 1 by 3. So this is gm. Now we can say that because am is greater than equal to gm, therefore we can say 4x plus 2y by 6 is greater than equal to 3 into 2 to the power 1 by 3, or 4x plus 2y is greater than equal to 6 into 3 18 into 2 to the power 1 by 3, right? So we can say 4x plus 2y का जो मिनिमम वैल्यू पूछा है ना, ये क्या है? या तो इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा. तो इसका मिनिमम वैल्यू यही होगा. So you can say 4x plus 2y, minimum of this will be 18 into 2 raised to the power 1 by 3. So this is my answer. Again, a very direct question based on AMGM inequality. In yesterday's class, yesterday's video, we had taken up one video on the same idea, AMGM inequality. We have explained in great detail what is AM, what is GM, and how to apply. In this question, we have only applied that concept and got our answer. So remember, whenever product of certain variables is given and you have to find the minimum of sum of variables, और the vice versa थे, जब भी कुछ वेरिएबल्स का सम दिया रहेगा और उनका प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछेगा, इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इट इज एग्जैक्टली बेस्ड ऑन एएमजीएम इनइक्वालिटी. उसी से ये आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से. अगर नहीं आया है तो कमेंट में प्लीज अपना कमेंट डालो आप लोग, ताकि मैं आपको दोबारा से समझा सकूं किसी और क्वेश्चन के थ्रू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बेस्ट विशेस फॉर योर कैट प्रिपरेशन. चीयर्स.